जय श्री माता जी। अभी हम सब लोग श्री माता जी के सामने नतमस्तक होके वंदन करके कुंडली उठा के बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। विल ऑल कलेक्टिवली बो डाउन श्री माता जी, देन रेज आवर कुंडली एंड टेक बंधन। बंधन लेने के बाद दोनों हाथ श्री माता जी को। After taking raising or taking bandhan, we put both our hands towards Shri Mata Ji. Observe the vibrations in both our hands. दोनों हाथों में अपने तालु भाग से महसूस करते रहेंगे समान तरीके से वाइब्रेशंस आ रही हैं। मैं तालु भाग से महसूस करेंगे दोनों हाथों की हथेली, मूलाधार एरिया हाथ में और पांच उंगली। From top of our head, we'll observe the center of our palms. Surrounding the center of our palms, which is above Sagar, the Mooladhara on the palms and the five fingers. The more centered we are on the palms, the faster the Sushumna starts forming. जितना हम हमारे हाथ पे अपना हथेली पे जितना अच्छी तरह अपना चित्त बैठा है उतनी अच्छी तरह अपना सुषुम्ना बनता जाता है। अभी दोनों हाथ धरती मां पर। We'll put both our hands on Mother Earth. Mother Earth, please forgive us that we have been insensitive to your love. Mother Earth, please forgive us that we walk on you with our foot. Mother Earth, please bless us with immense patience and tolerance as we get into meditation. Please observe all the imbalances in our chakras and nadis. वो धरती माँ कृपा करके हमें माफ कर दीजिए, हम आप पे अपने पैर रख के चल रहे। वो धरती माँ कृपा करके हमारे चक्रों नाड़ियों में जो भी असंतुलन है अपने में खींच लीजिए माँ। वो धरती माँ कृपा करके हमें लंबे ध्यान करने के लिए और अपना और सहन प्रदान कीजिए। तालु भाग से महसूस करते रहेंगे दोनों हाथों में क्या हो रहा है।
ये आदि भूमि देवी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। यही मूलाधार चक्र पर हम अभी गणेश मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी लेफ्ट हैंड श्री माता जी को, विल पुट आवर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स श्री माता जी, राइट हैंड रिमेन्स ऑन मदर अर्थ। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो, श्री भैरवनाथ हो। कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी में जो भी असंतुलन है उसे धरती में विलीन कर दीजिए माँ। जो भी हमारे भूतकाल के विचार है, जो भी कंडीशनिंग्स है, उसे धरती में विलीन कर दीजिए माँ। श्री माता जी, यू आर साक्षात श्री महाकाली श्री भैरवनाथ। Please remove all the imbalances in our ida nadi and give it to Mother Earth. Please remove all our past thoughts and conditionings and give it to Mother Earth. तालू बाग से महसूस करते रहेंगे कौन सी उंगली में से ठंडी हवा अंदर आ रही है और राइट हैंड से कुछ धरती में जा रहा है कि नहीं। We'll observe if something is going down from our right hand into Mother Earth and which of the fingers of the left palm have started absorbing cool air. अगर कभी भी विचार आ रहा है तो श्री माता जी को देखते रहेंगे। If we're getting thoughts, we'll keep looking at Shri Mata Ji.
अभी अपना राइट हैंड श्री माता जी को आप. I will put our right hand towards Mataji, left hand on Mother Earth, left hand धरती माँ पे. Attention right मूलाधार पर. Attention on the right मूलाधार from top of our head. Shri Mataji, I am going to be worthy of your appreciation. Please make me humble so that I am appreciated by you. My only desire is to please you. Shri Mataji, you are Sakshat Shri Ganesha. Shri Ganesha, please give me wisdom and discretion. श्री माता जी, मैं आपका प्रशंसा का लायक बनूंगा. कृपा करके मुझे विनम्र बना दीजिए ताकि मैं आपके प्रशंसा का लायक बनूं. श्री माता जी, मेरी एक ही इच्छा, आपको प्रसन्न कर सकूं. श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हो. कृपा करके हमें सत सत विवेक बुद्धि प्रदान कीजिए मां. अपने सहस्रार से मूलाधार को महसूस करते रहेंगे. फ्रॉम टॉप ऑफ आवर हेड विल ऑब्जर्व द मूलाधार चक्र. आंखें बिल्कुल बंद. आईज फुली क्लोज्ड. माँ कृपा करके मुझे विनम्र बना दीजिए माँ. प्लीज मेक मी हम्बल. अभी अपना लेफ्ट हैंड आकाश की ओर. विल पुट आवर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई. श्री माता जी, कृपा करके हमारे पिंगला नाड़ी में जो भी असंतुलन है, जो भी भूत भविष्य काल के विचार है, जो भी प्रणाली का हम बना रहे हैं, जो भी पिंगला नाड़ी में अधिक गर्मी है, उसे आकाश में विलीन कर दीजिए माँ. श्री माता जी, प्लीज रिमूव ऑल आवर फ्यूचर थॉट्स, एक्शन, प्लानिंग एंड हीट in our Pingla Nadi and give it to ether, the sky element.
महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड से कोई आकाश में जा रहा है कि नहीं, राइट हैंड से कौन सी उंगली में से ठंडी हवा अंदर आ रही है। दोनों हाथ अपने गोद में, विल पुट बोथ और palms on our lap. We will take our right hand on our forehead, Agna chakra. राइट हैंड आग्नेय चक्र पर रखेंगे और यहाँ लॉर्ड्स प्रेयर बोलेंगे. वी विल से लॉर्ड्स प्रेयर. आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever and ever. Amen. हाथ वही रखे रहेंगे थोड़ी देर के लिए. We will let that right hand be there for some time, and we'll observe which of the fingers of the left palm are we observing cool air. और महसूस करते रहेंगे लेफ्ट में कौन सी उंगली में से ठंडी हवा आ रही है. दोनों हाथ अपने गोद में. Observe by bringing our hands back on our lap. अभी अपना राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर. विल टेक योर राइट हैंड 2 inches above the head for 2 minutes. राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर 2 मिनट के लिए. महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशंस आ रही कि नहीं और ब्रह्म अंदर खुल रहा है कि नहीं.
फिर राइट हैंड को नीचे ले आएंगे, लेफ्ट हैंड को सर के 2 इंच ऊपर, राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड 2 inches above the head. For 2 minutes, we'll observe if vibrations are coming, if the Brahmarandra is opening. 2 मिनट के लिए महसूस करेंगे वाइब्रेशंस आ रहे कि नहीं और ब्रह्मरंध्र खुल रहा है कि नहीं. लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर, left hand down, right hand 2 inches above the head, and we'll slowly keep lifting our right hand up and up till where we feel the vibrations. आहिस्ता आहिस्ता राइट हैंड जो सर के 2 इंच ऊपर पड़े, आहिस्ता आहिस्ता उसे ऊपर उठाते जाएंगे जहां तक हमको वाइब्रेशंस का महसूस हो रहा है. राइट हैंड जितना ऊपर तक जा सकता है वहां तक ले जाएंगे और महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशंस आ रहे कि नहीं. अभी राइट हैंड नीचे लाएंगे, लेफ्ट हैंड सर के 2 इंच ऊपर, लेफ्ट हैंड 2 inches above the head. Now again we'll keep lifting our left palm slowly up and up till the height we continue to feel these vibrations. लेफ्ट हैंड ऐसा ऊपर जाता जाएगा जहां तक हमको वाइब्रेशंस का एहसास हो रहा है. आहिस्ता आहिस्ता. पूरा ऊपर तक चले जाएंगे जहां तक हमको वाइब्रेशन का महसूस हो रहा है, जहां तक हाथ जा सकता है. और चित्त को वहां छोड़ के दोनों हाथ नीचे ले, leaving our attention there, will bring both our hands down. Now we'll feel the axis. अभी एक्सिस का महसूस करेंगे. सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से सहस्रा, सहस्रा से जहां चित्त छोड़ा है और वहां से अपने दोनों हथेली को महसूस करेंगे. यही एक्सिस है. We'll observe the axis, which is Sushumna Nadi, Mooladhara to Sahasrara, Sahasrara to where we left our attention, and from there observing the center of both palms. अभी अपना राइट हैंड हृदय पे रखेंगे. We'll put our right hand on the left heart and we'll say morning prayer. Shloka, which I had told Mahatma Ji that he should put it first. He said, I was a very small girl, but he listened to me, which is a beautiful thing. Pratar namami. The first thing you have to say, Pratar namami, Rudhi sanspuradma tattvam, Satchit sukham paramahansa gatim turiyam. Meaning, early in the morning, I pray to that principle of my spirit, which is the truth,
the attention and joy, so that I should go to the highest state of my ascent. संस्फुरात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघा. अर्थ कळला का? प्रातर नमामि, मैं सवेरे उठ करके नमस्कार करता हूँ. हृदय संस्फुरात्म तत्व, हृदय में स्फुरन पाने वाले उस तत्व को. कौन सा तत्व है? डिवाइन लव. उस तत्व को मैं याद करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ. प्रातः नमामि हृदय संस्फुरात्म तत्वम सच्चित सुखम. सच्चित सुखम, जो सत्य है, चित है और सुख है. परमहंस गति तुरीयम, तुरीय दशा उसे कहते हैं जिसमें आप आ गए. पार होने का मतलब है तुरीया. आप उस दशा में आ गए हैं, परमहंस गति की दशा में आ गए. परमहंस गति तुरीयम, उस दशा का, उस अवस्था का मैं नमस्कार करता हूँ. अभी तो जो आए नहीं वो गा रहे हैं, लेकिन आप आ चुके. प्रातः नमामि हृदय संस्फुराद तस्मम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर, जो स्वप्न जागर, स्वप्न में, जागृत अवस्था में, सुषुप्ति मवैति नित्यम, सुषुप्ति अवस्था में सब में नित्य रहता है. चाहे आप जागते रहें, चाहे आप सोते रहें, चाहे आप सबकॉन्शियस से रहें. सुषुप्ति माने सबकॉन्शियस में, और उससे भी अनकॉन्शियस में रहें, जहाँ वो नित्य रहता है. यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम, वो अलेपा, वो निर्लेप ब्रह्म मैं हूँ. न च भूत संघ, मैं ये जो भूत संघ है, भूत संघ वाले 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर मन बुद्धि जो है वो मैं नहीं, लेकिन वो ब्रह्म है जो नित्य अविनाशी हमेशा हर स्थिति में रहता है. इस श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं. प्रातः नमामि हृदय संस्फुरात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघ. ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है कि हम वो हैं जो निर्लेप, निरंजन, निराकार ब्रह्म है. हम ये जो भूत संघ है, जो 5 महाभूत मिलकर के उनके संघात से बना हुआ जो बाहर का ढकोसला है, वो नहीं. जो अविनाशी अंदर विराजता है, वही हम हैं. ये तभी होगा जब हमारा चित्त उसमें बैठे. चित्त तो वहाँ बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया है, किंतु वो चित्त अभी भी बाहर की ओर दृष्टि की हो. उसे जैसे आप अंदर की ओर दृष्टि कर लेंगे, आप परमहंस गति के दशा में बैठे, उस गति पर है, आपको बिठा दिया है उस गद्दी पर कि आप परमहंस हैं. लेकिन परमहंस को अपने जो कीचड़ से लगे हुए पैर हैं उन्हें साफ करके और अपने आसन पे उस इज्जत के साथ बैठ जाना चाहिए, जैसे कि कोई राजा अभिषेक के बाद बैठ जाता है.
अपना हाथ को गोद में ले लेंगे, अपना एक्सिस को महसूस करते हुए सुषुम्ना नाड़ी और अपने दोनों हाथों के सहस्रार महसूस करते हुए हम श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। Now observing our axis, we will listen to Shri Mataji speak.
seated. Yes, please, yes. Ah. So very nice to come and meet you all here. Very kind of you to have invited me to your ashram. So you must have realized from the experience of these 2 days program that we had, though it looks formidable in the beginning, it's not so difficult to achieve results and to get people realized. I find all of you have been very sensible and you worked it out very well. It was such a pleasure, such a joy for me to see that you gave realization to so many people and you managed to convince them about Sahaja. It is very difficult in these modern times, especially in the country like America and others of the same kind. I'll have this in the hand, it's better. That it's impossible for people to know that there is anything beyond. Of course, unknowingly they are seeking, unknowingly. They are not even aware that there's a possibility of their getting a self-realization. And so many fake people have arrived that they think it's another kind of a guru shopping that they have to go through. And when I came first to America, I think the first country I came to was America in a way. I had gone to Iran before that because my brother was there. And when I came first to America, it was a surprise to me in so many ways that they came to my lectures, quite a lot of them, in every place I went to. But they did not understand what I was saying, what I was trying to communicate to them. And they did not like that I told them that they have to be careful about people who take money from them. There are no courses. I think there are these lectures somewhere with me, which I gave in those days. I didn't talk of negativity or anything, though I found the whole place was flooded with negative forces. All that was done in those days had an effect.
on the minds of the seekers. And that's how the seekers were lost. So many of them were lost. And again, what we find, that they are getting lost more and more. At this time, we cannot say in what area or what group or what part of the country will be able to work out better. But in any case, better in the West Coast, I think people are more reasonable about it. For you, it is a difficult task to talk about Sahaja Yoga. But I would say you should go all out, not to feel shy, not to make reservations about it. How they talk about their gurus all the time. You meet somebody in the plane sitting next to you, suddenly he starts talking about his guru. You are amazed when you don't know the person at all. He starts talking about his guru. So to open the topic, best is to wear something of my photograph or something, so that people ask, who is this person, to begin with. Or could be a badge if you can wear it, or if it is allowed to wear. Something like that if you wear and people ask you, you can talk. You can start talking. We have to talk. That's the only way we can spread Sahaja Yoga. Of course, you can have your programs, you can get people, you can give them realization, this, that. But to talk about it is important, because see, those people who have come much later than me, much later than me, to this country are so much well known everywhere, everybody knows about them. Now, of course, it is also true, the second point is that in Sahaja Yoga you have to become. You cannot just say that, all right, I have become a Sahaja Yogi. No, you cannot. Nor can you say, I am following Shri Mataji. That also cannot be said. Nor you can say that, all right, we have an organization or something like that, or I'm wearing this just because she's my guru. You can't say that. You have to become. You have to become a Sahaja Yogi. If you have to become a Sahaja Yogi, then it has to be worked out. And that takes time. To rise from Nirvichara to Nirvikalpa, it takes time. For some people it takes more time. For some people it takes less time. Depends on the preparation of a person. Also, I would say previous lives, good deeds, and these lives, understanding, so many things are there. So it takes time. But at least one can talk about it. So the atmosphere is created. You can talk to people, tell them that we have found the truth and it's very simple. You can't pay for it. It just works. It's spontaneous. It's a living process. It's an evolutionary process. You can talk like that. Not about me, but about Sahaja Yoga in an abstract manner. And it's such a wonderful thing. One should do it. All such talks are going to help us a lot. Though I would say those who listen to you may not get realization. But at least in the atmosphere it will be. And that is going to help us a lot. If it is in the atmosphere, people know that there's something like this coming up. For you people, of course, you have to work hard. And you have to become Sahaja Yogis. Becoming is a little bit a difficult task sometimes, because there's this great Mr. Ego, or maybe certain conditionings, you see, that people can't give up. And that they find it difficult to get out. But if you know how to raise your Kundalini, she will manage it. She knows how to do it, and she will give you that status. But first and foremost thing is to meditate and to raise your Kundalini. Meditation is the only way you can grow. There's no other way out. Because when you meditate, you are in silence. You are in thoughtless awareness. Then the growth of awareness takes place. Then it opens out. But if you are thinking, supposing there's a lake, and the lake is completely in a turmoil, nothing can grow. But supposing it is silent, then
lotuses can grow, anything can grow in it. In the same way, if your mind is agitated and your growth is not yet fully expressing itself, then it's such a vicious circle that you are agitated and your growth is hindered, again you are agitated, your growth is hindered. So the best way is to take to meditation. When you take to meditation, this turmoil will settle down. And when it will settle down, your growth will take place. After meditation, you will feel definitely that you have come out very well, you have grown very well. But for that, one has to be very honest. You cannot force people to be honest. That's one thing you can't do. You have to be honest to yourself. You have not to be hypocrite. You have to see for yourself that whatever you are doing is for your benevolence, is for your good, and that you have to do it because it is good for you to begin with, and then for the good of the humanity. You are doing for the good of the humanity. Now, some people who come for the first time will have lots of doubts because of ego. They have lots of doubts because of ego. How can that be? How can this be? All kinds of things they ask. Now, you have to say that first of all, you develop your insight. You develop your enlightenment. Your light is not sufficient. In the light only there are no doubts. Supposing in darkness you think that this table has no cover, it's all right. You can think whatever you like. But when there is light, you see for yourself there is a beautiful cover on top of this table. In the same way, it happens to us that we have to achieve a state. And once we achieve that state, then there's no question, there's no doubt, there's nothing, and you become so empowered. It is such a simultaneous thing. It works as soon as you achieve something, it works. When it works, then you are convinced. I'd say it's a very beautiful new chain starts within yourself, and then you really start enjoying your joy of yourself. But that portion for anyone is little risky. For anyone. If you have crossed that, then you are above it. But if you are still little bit in between, be careful. You can be deluded. You can be quite deceived about it, because we have all kinds of people in Sahaja. The door is open to everyone. We get many negative people also. They are still lingering on the periphery. And you are also on the periphery, then you meet those people. And you think, how can that be? This person was so bad. He says he's a Sahajogi, but he was like this, like this, like this. That shows one thing for definite, that if you see somebody of that kind, of that mentality, which is not Sahaja, if you see someone who is not up to the mark and who behaves in a very mundane manner, or maybe in a very ridiculous manner, know that that person is not a Sahajogi. But you have to be a Sahajogi. Don't judge Sahajoga by other people. You judge it by your own ascent and by your own enlightenment. If you are not enlightened, you cannot see anything. Even if you are slightly enlightened and not enlightened fully, then you see other people. Don't see other people. See yourself. Seeing yourself, you will become more aware and more conscious. And once this awareness grows, you start seeing the truth as it exists. So for Sahajogis it is important, first of all, to wash themselves. Now we discovered that, you see, in the groups, and when we form a collective and when we start living together, see, some of the old style things still linger on. A common thing is a gossip. Christ has called them, beware of the murmuring souls. He knew that these will be coming back on the stage again when I will be here to tell you about Sahaja. So he already told that beware of the murmuring souls. And these murmuring souls, first of all, their attention is not all right.
Their attention is here and there, and they're trying to find out something. And then they start talking about things. Then they start creating problems. And they are somehow like to destroy your realization. They want that you should not achieve what you are achieving because they cannot achieve it. So then they see that somehow you should be destroyed. So they talk to you in a manner that you start doubting yourself. You start doubting Sahaja Yoga. Or else they start talking about others and try to create a problem for you. For that, I would say that nobody should talk to anyone about others. It's one of the tricks they can play. As we have in Ramayana, there was a maid servant called Manthara. That's why it said in Indian language that don't talk to people who are lower in levels. I don't mean lower in the way that people understand, but lower in levels as far as the spirituality is concerned. So this lady went and told the stepmother of Sri Rama, who loved Rama very much, that see now, when Rama becomes the king, your son will have no place and all those things. And she convinced her. By that the whole Ramayana was created and Rama had to go to the jungle. So all such people start talking. They talk in such a manner that you feel that, we are very important and the lady or the gentleman is taking so much interest in us and telling us this. And then this negative force starts forming a group among yourselves. And when such a group is formed, that group becomes anti-God, anti-Sahaja Yoga. And then it is a very big problem because the undercurrents start and they try to destroy your collective. So anybody starts talking ill of another person, just tell that person, shut up. I don't want to hear anything against anyone. If you have to say anything, go and tell the leader, but not me. I'm not interested. You be interested in your ascent. If you are not interested in your ascent, then what you will do, you will watch other people. You look at others. You see how they are, not yourself. Now, it is for your gain you have come to Sahaja Yoga, not for anybody else's gain. First of all, your gain. And once you gain something, then you can only help others to do something about it. So, it is important to understand the first rule of Sahaja Yoga is that you look at yourself. How are you? Are you really progressing? Or you are worried about other things like your business, this, that. Or you are worried about your ascent. What are you worried about? Are you worried about your ascent? If you are worried about your ascent, what are you doing about it? That has to be the main object of life. The rest of the things follow it. Once you ascend, the whole cosmos can look after your problems. But you must ascend into the kingdom of God. That's the main point is. So, first of all, you have to ascertain about yourself. Am I ascending? Am I transforming? Am I giving up all my bad habits? Am I getting rid of my temper? Am I getting peaceful? Am I now sweet? Or am I now still the same horrible criticizer of others? Just put your attention to yourself and see for yourself. It's like a mirror. You start seeing yourself in the mirror, what's wrong with you. And then you try to correct it. Now, second point is that you must see your vibrations, what centers you are catching, yourself. For that you have to give yourself a bandhan. You give yourself a bandhan and see for yourself what's wrong with you. When you give yourself a bandhan, you will know about your chakras. And you'll be amazed. I have known some people who found out they had cancer. Through centers, they could say, Mother, we must be having cancer. And then it was discovered in time and we could manage it very well. Because they themselves found it. And then they asked me what to do and I told them and they got cured. When they went to the doctors, they said they had cancer. And once they cured themselves, they were all right.
So that is how first pay attention to yourself. You find out what's wrong with you. Some of you might be having terrible ego. Then maybe you might be having a very bad Agya chakra. Then you should find out, have you got Agya chakra? This is ego. Then there's a very good remedy in Sahaja Yoga, which may look ridiculous, but it's very good remedy, is to beat yourself with shoes, as they know is the beating with the shoes. It's called as a shoe treatment. Now, then you have to go further. See, you find yourself that your right side is hot. What you do is to put your right side towards the photograph and left side up towards the ether. The ether takes away the heat. But what actually happens is that your right side gets the vibration and the heat is pushed towards your left and passes out into the ether. Now this heat comes from too much futuristic living. Those people who are too much futuristic, they have too much heat. And too much heat has to go away. And when this heat starts going away, then you are amazed how it works. For that there are various things we have to use, but mainly for right-sided people, they should not use any light at all. They should not sit in the sun. They should sit in the moonlight. They should read some poetry. They should not tie up watches. They should not look at time. They should allow the time to pass, and they should just become very sort of emotional people. They should sing songs of bhakti. They should not do hatha yoga. There's so many things they should not do if they are right-sided. You will be surprised how people have been helped through this kind of a treatment which treats one side of your being. The left-hand side people are the people, as you know, are the ones who are docile, who bear up lots of things from others and cry and weep and all the time, are on the loser's end. Such people have problems also because all their organs are lethargic and they have problems of a lethargic heart, lethargic liver, lethargic intestines. Everything becomes very lethargic. All these left side things can be cured. Plus they might have some sort of a bandhan in them, in the sense they are possessed by someone. Of course, some of them are possessed by right side also. Not that only the left side is possessed, but from the right side also they are possessed. And left-sided possessions are of a peculiar type because they give you pain in the body. You get pains in the body. A right-sided person doesn't get any pain himself. He gives pain to others. He's very sarcastic, he's very aggressive. He troubles others. But the left-sided people have pains themselves. They get pain here and a pain there and pain here. So left side is to be cleared, as you know very well, through the light. Light is put before the photograph, left hand towards the photograph, right hand on the Mother Earth. So the left hand gets the light and the light passes through, and the negativity of the left side passes through the right hand, and the right hand is on the Mother Earth. The Mother Earth is the one who sucks in all these negative forces of the left hand side. So these are the two sides which we clear. But once you have cleared these two sides, then you can use the photograph. Sit with your both the hands towards the photograph and put both the feet in the water, a little bit of salt in it, and about 5-10 minutes you must allow vibrations to clear you out. Then wipe your feet, put the water properly into some disposal, and then sit down for meditation. If you can do that every day, even 10 minutes is more than sufficient. You don't have to do anything in an extreme manner. In the morning time, you have to give yourself a bandhan when you are going out. Don't go out without giving a bandhan. And attention should be all the time inside, in the sense that you're walking on the road, people have habit of seeing this, seeing that, seeing like that. The attention gets frittered away. What you should do is to see about 3 feet or 4 feet at the most from the ground and not above, because you can see all the beautiful children, flowers, everything. There's nothing very beautiful about that. So better is to see only up 3-4 feet. If possible, to fix your attention
So the attention becomes concentrated and you feel very relaxed and relieved of too much of wobbling of your eyes. Eyes are very important, and as you will notice, because you are all realized souls, that your eyes now have got a glint, a kind of a light in the eye, and that light shows that you are realized souls. But to keep it up, you have to look at things which are not anti-God, which are not dirty, which are not filthy, which are against Sahaj religion, which is against Sahaj culture. If you can manage that, it is going to help you a lot. जय श्री माता जी। थोड़ी देर के लिए हम ध्यान में रहेंगे। We'll continue to stay in meditation for some time with eyes closed, and from there, from top of our head, we'll observe the both palms. अपना तालू बाग से दोनों हाथों को महसूस करते रहेंगे थोड़ी देर। दोनों हाथ जोड़ेंगे। We'll join both our hands. Thank you very much, माता जी। Full meditation. अभी कुंडली उठा के बंधन लेंगे। जय माता जी। अभी इस मंच पर हम लोग विशुद्धि का क्लियरेंस करेंगे। आज शनिवार है तो आज विशुद्धि का दिन है, तो हम विशुद्धि क्लियरेंस करेंगे। पहले निर्विकल्प यानी केचरी ध्यान होगा, उसके बाद हम फुट सोक करेंगे। जिसको भी ध्यान कंटिन्यू करना है वो जाके प्रतिष्ठान, निर्मल धाम या एटर्नल नॉलेज सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवन हु वांट्स टू कंटिन्यू मेडिटेटिंग can please join the ocean, meaning join Pratishthan, Nirmal Dham or Eternal Knowledge Session. On this platform, we will now work on our Vishuddhi chakra. So that would mean we will do HD, meaning Nirvikalpa. Now, अब सब लोग को मालूम है कि केचरी में 3 स्टेप होते हैं और तीनों स्टेप आंखें खोल के ही करना पड़ता है। और पहला स्टेप में all the 3 steps have to be done with eyes open. So in first step, we'll lift our tongue and put it backwards as much as possible. We will not touch the palate. पहला स्टेप में अपना जीभ को शिमादे बताएंगी, जैसे शिमादे बताएंगी वैसे करेंगे। जिसमें पहली स्टेप में अपने जीभ को उठा के जितना पीछे मोड़ सकते हो उतना पीछे मोड़ लेंगे, मगर ऊपर वहां पैलेट को टच नहीं करना। फिर माँ बोलेंगी कि नाउ पुट बेंड योर हेड फॉरवर्ड टिल द चिन टचेस द चेस्ट, यानी अपने सिर को आगे की ओर थोड़ा नीचे झुका लेंगे और वो अपना छाती को छुए ऐसा। फिर बाद में माँ बोलती रहती कि सहस्रार को महसूस करते रहिए, हाथों को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए और सीधा बैठिए। Shimata will say to keep the attention on Sahasrara, loosen hands and sit straight. And इसके बाद शिमादे बोलती है अभी श्वास अंदर लो एंड रोक के रखिए। सो माता जी will ask breathe in and hold, and then उसके बाद शिमादे बोलती है अभी थोड़ा अपने पेट को अंदर लो ताकि वहां का हवा ऊपर आए।
माता जी has to press the stomach in and raise your hands. उसके बाद थोड़ी देर बाद माँ बोलेगी अभी छोड़ दो. Now leave it, Shimata says. Then step 2, इसके बाद क्या करेगी Shimata ji? Shimata ji will bend head backward. जैसे हम she will ask us to bend head backwards as we do Allahu Akbar. And we put both our Vishuddhi fingers in ears. तीसरा स्टेप में Shimata ji बोलती है कि अभी हम सिर को पीछे कर लेंगे और अल्लाह अकबर जैसे करते हैं दोनों विष्णु की उंगली वहां रखेंगे. कुछ मंत्र वंत्र लेने की जरूरत नहीं है, बस सहस्रार पे चित्र को रखो. हाँ शिवाजी. और फिर से वही फर्स्ट स्टेप में जैसे जीभ को पीछे रखा वैसे फिर से रखना पड़ता है. लाइक वी पुट इन द फर्स्ट स्टेप टंग बैकवर्ड्स, विल डू दैट एंड अगेन ब्रीथ इन एंड होल्ड. फिर से सांस अंदर लो और रोक के रखो और स्टमक को प्रेस करो ताकि हवा ऊपर आए. और फिर माँ बोलती है अभी छोड़ो. स्टेप 3 हो गया. स्टेप में क्या होगा? इन स्टेप 3 we will keep eyes open. Shri Mataji says keep eyes open, keep looking at Shri Mataji's bindi without blinking and with no pressure in the eyes. Shri Mataji बोलती है कि अभी आंखें खुले रखो. आंखें खुले ही रहेंगे मगर बिना पलक चिपकाए हुए, है ना, चिपकाए देखे, बस देखते रहिए आंखों को बिना किसी दबाव के साथ और सर पे ध्यान रखते हुए. अभी ये हम प्रैक्टिकली वीडियो देखते हुए करेंगे. ये वीडियो मैं बाद में भेज दूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये जो हमने स्पीच सुना. I'll send this video. कि आंखें खोल के ही करना है पूरा. देख लीजिए. Keep your eyes open. Now all the children should put their hands like this. All right? And watch me. Lift your tongues and put them back as much as possible. Turn it backward. Let it feel the bliss of the divine on its tip. Retournez votre langue dans votre palais autant que vous le pouvez. Now put your chin down, touching your... Don't close your eyes. In complete surrender. Put the chin. Regarde. Well, Appuyez votre menton sur votre gorge. but don't close your eyes. Pay attention to your Sahasrara. Sans fermer les yeux, avec l'attention sur le Sahasrara. Loosen your hands fully on the sides. Make them loose. Sit straight. Détendez les muscles de vos bras. Do not touch the palate. Got to them. Ne touchez pas le palais, mais allez plus en arrière. Avec la pointe de votre langue.
Now breathe in. Do not push back the tongue. Keep the tongue where it is. Breathe in. Inspirez. Now raise your stomach without taking out the breath upward, pushing the air upward towards the lungs. Push your stomach in. Rentrez votre estomac et poussez l'air dans vos poumons. Attention on the Sahasrara. L'attention sur le Sahasrara. You start seeing light through Sahasrara. Sort of the Sahasrara becomes like eyes. Now leave it. Leave it now. Maintenant, détendez-vous. Raise your. Relevez votre tête. Now put back your heads. Put the fingers. Put the attention to your Sahasrara, that's all. Don't say anything, no mantras. Take out your tongue. Push it back. Take in your breath. Push the stomach. De nouveau même exercice. Retournez votre langue. Rentrez votre estomac. Respirez. That's good. Now watch me continuously without blinking, Maintenant, nous regardons schéma- without any pressure on the eyes. nous regardons schématérie sensée des paupières. Attention on the Sahasrara. L'attention sur le Sahasrara. You can do it without blinking. May God bless you. This is it. Physically, we have worked out our attention. And on our Vishuddhi and on our Agna. Ainsi, nous pouvons physiquement aider l'ascension de notre attention au niveau du Vishuddhi et de l'Agna. जय श्री माता जी। अभी ये था अपना केचरी मुद्रा यानी निर्विकल्पा मेडिटेशन। अभी किसी को कोई डाउट्स है, कैसा लगा थोड़ा बताइए। प्लीज लेट मी नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस।
Very able to feel it well. भैया किया तो है, लेकिन अब सही हुआ है या नहीं हुआ है मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, आप पहला स्टेप कर पा रहे थे पूरी तरह? हाँ, थोड़ी देर सांस रोकी, लेकिन ज्यादा देर नहीं रोक पाई मैं। श्री माता जी तो बहुत देर रोक रही थी। हाँ, तो वो गलत किया हमने, मीनिंग अभी तक आया नहीं, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भैया इतनी देर सांस नहीं रुकती है। हाँ, अभी तो नहीं रुकती, प्रैक्टिस करेंगे तो 10-15 बार कर लेंगे तो आ जाएगा। 7 मिनट का तो है। जय श्री माता जी भैया। ट्राई तो किया लेकिन आज्ञा पर तान आता है। आग्ने पर क्या? तान आ गया ऐसा। अच्छा, ठीक, हमें करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आ ही जाएगा। ठीक है। जय श्री माता। Hey, Shimaji, I have a question. Yeah. Hey, Baya. So when we push our tongue back, when we say do not touch the palate, does it mean do not touch the roof of the mouth? Correct. Okay, got it. Thank you. ओके, बाकी लोग बताइए, किसी को हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग तो क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तक तो इतनी बात कर रहे हो तो आदत थोड़ी ना जानी चाहिए आपको। जय श्री माता जी भैया। भैया आंखों में लेफ्ट आंखों में ठंडक आई, थोड़ा सा पानी भी आया। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, आएगा और आएगा, बहुत आएगा। ओके। जय श्री माता जी भैया। दीदी। भैया मुझसे ठीक नहीं हुआ, हाँ हाँ, समझ में नहीं आया था। प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, प्रैक्टिस करिए बस। जय श्री माता जी भैया। बहुत वाइब्रेशंस हुए, मेरा बॉडी पूरा वाइब्रेट कर रहा था। हाँ। तो मैंने सही किया या नहीं मुझे पता नहीं, बट एक बहुत ऊर्जा ऐसे पूरे शरीर में आ गई थी। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ तो सही हुआ है, सही हुआ। वेरी गुड। चलिए तो फिर अभी फुट सोक की अरेंजमेंट करते हैं। 2 मिनट में फुट सोक वी विल स्टार्ट। ओके, जय श्री माता जी। We'll start in 2 minutes.
ओके, सब लोग रेडी है? तो 2 मुट्ठी भर नमक, विल पुट 2 fistful of salt. पानी को बंधन देंगे, विल गिव वाइब्रेशंस ऑफ वाटर. ओम त्वमेव साक्षात् श्री समुद्र देवता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. Shri Mataji, please make this water like sea water. Make this sea water remove all the imbalances of chakras and nadis. We'll put both our feet in the water. दोनों पैर पानी में रखें. अभी क्या करेंगे, हम दोनों पैर हाथ को इस्तेमाल करेंगे. विल यूज हैंड एंड क्लियर आवर चक्रा. सो लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स श्री माता जी, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट विशुद्धि. हम लोग राइट हैंड लेफ्ट विशुद्धि पे रखेंगे. और कोई भी चक्र क्लियर करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हाथ श्री माता के सामने है उसमें सभी उंगलियों में ठंडी हवा अंदर आनी है. जहां हाथ रखा वहां ठंडा होना है और ब्रह्मरंध्र खुलना है. ये 3 चीज होना है. तो हम अगला 5 मिनट यही महसूस करते रहेंगे. सो फॉर एनी चक्रा टू बी क्लियर्ड, द हैंड टुवर्ड्स श्री माता जी has to absorb cool vibrations in all the fingers. Where we put our hand, it has to become cool and the brahmarandra should open. So we'll observe all these 3 things. So right hand is currently on the left vishuddhi. अपना right hand left vishuddhi पे है, left hand शिमात्री को. बस आंख सर को थोड़ा घुमा लेंगे और अगर हो सके तो शिमात्री को बिंदी देखते रहेंगे और महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है, जहां हाथ रखा वहां क्या हो रहा है. आंखें खुले रहेंगे, आईज विल स्टे ओपन. महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड की कौन सी उंगली में से ठंडी हवा अंदर आ रही है. वी आर ऑब्जर्विंग which of the fingers of the left palm are we getting cool air.
अगर एक उंगली भी आ गई, बाकी सब उंगली आराम से आ जाएंगे, क्योंकि हमको मालूम पड़ गया कि ये ठंडा गर्म कौन महसूस कर रहा है. So even if one finger starts becoming cooler, meaning absorbs cool air, all other fingers will start absorbing cool air in a matter of time. Why? Because we become aware who is observing this. अभी बताइए कितने लोग को लेफ्ट हैंड में ठंडा आ रही है? Let me know how many people are getting cool air in the left hand. At least one finger. Okay. बाकी लोग बताइए अनम्यूट करके. Others also please unmute and tell me please. हाँ भैया, आ रही है, ठंडा आ रही है थोड़ा. पहले तो मेरा बहुत हाथ ऐसे भी, मेरा शरीर पूरा बहुत गर्म हो गया है भैया. और मतलब जब मैं वो करती हूँ तो मतलब लेफ्ट में कम आते हैं मेरे, और धरती माँ में जब मैं हाथ रखती हूँ तब आते हैं. हाँ, हो गया दीदी. आगे बाकी लोग बोलिए. जय श्री माता जी भैया. श्री माता जी. जय श्री माता जी भैया. आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भैया. बस बस, वेरी गुड. माँ कैसे करता है? भैया ठंडा आ रहा है हाथ में, उंगलियों में आगे की तरफ थोड़ा ठंडा लग रहा है. वेरी गुड. बाकी लोग भी बताइए. भैया जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. लेफ्ट हैंड में ठंडा आ रहा है, लेकिन सहस्त्रार में थोड़ा सा खिंचाव सा हो रहा है. ठीक है, ये स्टेप 1 है. स्टेप 1 कोई भी चक्कर क्लियर करने के लिए स्टेप 1 ये है कि जो हाथ शिमाजी को और है उसमें ठंडक आनी चाहिए. स्टेप 2 आ गई है, उसमें ठंडक आ रही है. हाँ, स्टेप 2 जहां हाथ रखा वहां ठंडा होना चाहिए. स्टेप वहां 3 भी ठंडा हो गया. हाँ, स्टेप 3 ब्रह्म खुलना चाहिए. ये टाइम लगेगा, बैठे रहिए. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. अभी लेफ्ट हाथ में लग रहा है ठंडा. वेरी गुड, वेरी गुड. बैठे रहिए. ये आदत कर लेना चाहिए. क्लियरेंस ऐसा होना चाहिए, हाथ रखते ही श्री माता जी से की तरफ ठंडी हवा आती है ये, और वो ठंडी हवा जाके जहां हाथ रखा वहां ठंडा होता है. ये एहसास सबको हो जाना चाहिए. करते रहिए. अगर किसी को उंगलियों में सेंसिटिविटी नहीं है, if someone is not having sensitivity in the hands, the sensitivity will increase with daily doing Allahu Akbar and Lord's Prayer morning and evening for 3 months. हमने ये देखा कि अगर हाथों में ये सेंसिटिविटी नहीं है तो बस सुबह शाम अल्लाह अकबर और लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे 3 महीना, तो वो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. महसूस करते रहिए लेफ्ट हैंड की सभी उंगली में ठंडी हवा आ रही कि नहीं, और जहां हाथ रखा वह ठंडा हो रही नहीं. 1-2 भी हो गया तो काफी है, बाकी आराम से होता जाएगा. बस देखते रहिए. बस देखना आदत कर लेना है, क्योंकि कौन देख रहा है? आत्मा.
రాజు అంకుల్ మీకు వస్తుందండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో చల్లగా కేవీఆర్ జీకే రాజు గారు ठीक है अभी पैर धो लेते हैं और दूसरा फुट सोप रेडी करते हैं विल वॉश आवर फीट एंड गेट द सेकंड फुट सोप टू टब रेडी आज 10 बजे ओपन हाउस है टुडे एट 10 o'clock we have open house please join चलिए 2 मुट्ठी पर नमक विल पुट 2 fistful of salt पानी को वाइब्रेट करेंगे विल वाइब्रेट द वाटर ओम तमेव साक्षात श्री समुद्र देवता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः श्री माता जी प्लीज मेक दिस वाटर like sea water make this sea water remove all the imbalances in our chakras and nadis दोनों पैर पानी में we'll put both our feet in the water now right hand towards Mataji left hand on the right Vishuddhi right hand Shri Mataji को और अपना लेफ्ट हैंड राइट विशुद्धि पे रखेंगे आंखें खुले रहेंगे बस महसूस करते रहेंगे कि राइट हैंड की कितनी उंगलियों में ठंडी हवा अंदर आ रही है और जहां हाथ रखा हुआ ठंडा हो रहा है कि नहीं और ब्रह्मरंध्र खुल रहा है कि नहीं so what we'll observe is if we are absorbing cool air which of the fingers in the right hand are we observing cool air and where we put our left hand is it getting cooler and if the brahmarandra is opening patience silence and witness शांति से बस साक्षी भाव में महसूस करते रहेंगे
श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आइस ओपन। शांति और साक्षी। Vishmataji, now you people tell me if you are absorbing cool air in the right hand. आप लोग बताइए राइट हैंड में ठंडी हवा आ रही है कोई भी उंगली में? यस भैया, राइट हैंड में ठंडी हवा लग रही है और जहाँ पर हमें विशुद्धि चक्र, ये राइट विशुद्धि चक्र पर हैंड रखी है वहां पर भी ठंडी ठंडी लग रही है। बहुत अच्छा, माँ के कृपा। बाकी लोग भी बताइए राइट हैंड में कोई भी उंगली में आ रही है कि नहीं ठंडी हवा? जय श्री माता जी भैया। दीदी केवल ये जो थंब के बगल वाली जो शायद विशुद्धि फिंगर होती है इसमें ही बस आ रही है और कहीं नहीं आ रही है। वेरी गुड, ठीक है, बस देखते रहिए। जय श्री माता जी भैया। दीदी भैया मेरी ना उसमें नाभि में और विशुद्धि में ठंडा लग रहा है मेरे को उंगली में। वेरी गुड। और हाँ जय श्री माता जी। बस देखते रहना है, ठीक है, देखते रहना है। भैया मेरे राइट हैंड में उंगलियों में आगे की तरफ ठंडा हो रहा है। ओके, माँ कैसे कृपा। जहाँ हाथ रखा है वहां इतना नहीं लग रहा, लेकिन उंगलियों में पता लग रहा है। बहुत अच्छा। जिसने अभी तक बात नहीं किया वो बात करिए। Anyone who has not spoken till now, please speak. जय माता जी भैया। जय माता जी। भैया मेरे नाभि और आज्ञा चक्र वाली उंगली में हो रही है ठंडक ठंडक आगे टिप पे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड।
पहली बार भी कर रहा हूँ और लेकिन फायदा हुआ, काफी अच्छा मतलब लगा। वेरी गुड। हाँ कैसे मृता? हाँ बोलिए दीदी, रीता दीदी। मेरा मतलब राइट हैंड का सभी पाम में फिंगर में भी आ रहे हैं और लेफ्ट हैंड जहाँ पे रखा है वहां पे फील नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, हो जाएगा। अभी जिसको भी अभी तक बात किया, सब लोग को 2-3 फुटस्टेप करना ही है, क्योंकि राइट हैंड में ठंडक जल्दी आना है। Anyone who has spoken, if you are not getting cool breeze in the right hand, still we will have to do 3 consecutive foot soaks on a daily basis. Still we absorb cool air in 1 foot soak. जय श्री माता जी भैया। हाँ बोलिए जयश्री दीदी। जय श्री माता जी भैया। जयश्री दीदी बोलिए दीदी। जी भैया जी, राइट हैंड में मतलब ठंडक पूरे में ही आ रही है। ओके बहुत अच्छा। जी, और विशुद्धि पर से जैसे मैंने हाथ हटाया तो ठंडा लग रहा है। अच्छा ठीक है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। हाँ जयश्री दीदी। हाँ भैया, राइट हैंड में लग रहा है। ओके बहुत अच्छा। जय श्री माता जी भैया। हाँ जयश्री दीदी। भैया मैंने तैयारी नहीं की हुई थी फुटस्टेप की, मैंने पहली बार ज्वाइन किया है आज ये मेडिटेशन विराट का। तो मैं दिन में कभी भी कर सकती हूँ ना ये? ऑल्दो मैंने पैर पानी में नहीं डिप किए थे, पर मुझे हाथों में ठंडी हवा तो आ रही थी। बस हाँ, ये जहाँ पर भी आपने हाथ रखने को बोला था, जहाँ पर भी आपने हाथ रखने को बोला था, मुझे वहां पर भी ठंडी हवा फील हुई। भैया भैया मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है। हाँ भैया, ये ना राइट हैंड एक्सेस ठंडा हो रहा है मेरा, मगर कोहनी के पास से बहुत पेन है। हवा आ रहा है कि नहीं? नहीं हवा नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, एकदम बर्फ जैसा ठंडा। हाँ ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लाउड वाइब्रेशन करना चाहिए रोज। ठीक है, फ्लो नहीं है, रोज होना है। ठीक है, इसके बाद आप जब भी टाइम मिला, अभी 10 मिनट का ब्रेक होगा, तब आप क्लाउड वाइब्रेशन कर दीजिए, स्काई वाइब्रेशन। ठीक है, चलिए अभी लेफ्ट विशुद्धि हो गया, राइट विशुद्धि हो गया, यानी इसका मतलब है सेंट्रल विशुद्धि भी बाद में कर लेंगे, अल्लाह अकबर बाद में करेंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए दोनों पैर धो लेंगे। जय श्री माता जी भैया। हाँ पैर धो लीजिए, पैर धो लीजिए। एक बात पूछना था कि जब हम पानी को बंधन दीजिए, पानी को बंधन दीजिए, फिर बाद में कुंडली उठा के बंधन लीजिए। प्लीज रेज योर कुंडली एंड टेक बंधन। तीसरा कभी फुटस्टेप होगा भी क्या? आप कर लीजिए, अभी यहाँ नहीं होगी। अच्छा अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद। बंधन लेने के बाद दोनों हाथ जोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच श्री माता जी फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लियरेंस। ठीक है, अभी अपना 10 मिनट का ब्रेक होगा, इसके बाद शू बीट होगा। तो शू बीट के लिए आपको दोनों चप्पल चाहिए। सो at 7:05 we will have our shoe beat. Now we have a break of 10 minutes. शू बीट के बाद वो चप्पल फेंकने होते हैं क्या, ये यूज में लाने होते हैं? शू बीट के बाद फेंकना नहीं होता, जो वही चप्पल आपको फिर बाद में हर वक्त यूज करना पड़ेगा। लेफ्ट चप्पल राइट चप्पल दोनों चाहिए, और फिर से बाद में नहीं पहनने का वो। अच्छा जी, शू बीट के लिए इस्तेमाल करिए। और भैया एक सवाल है, शू बीट हम घर पर नहीं कर सकते ना, बाहर करना पड़ेगा ना? या बालकनी में, या सर छत के ऊपर, या खिड़की के पास, जहां से भी आकाश दिखता है। ओके ठीक है भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया, एक बात पूछना था। पूछिए। ये जब हम दोनों हाथ, ये जब हम कान में वाइब्रेशंस देती हूँ तो दोनों हाथ से कि सिर्फ दायां हाथ से? दोनों हाथ आकाश की ओर। नहीं, हम कान में वाइब्रेशंस देती हूँ, जब कान में कम सुनाई पड़ता है इसके वाइब्रेशंस देती हूँ, तो दायां हाथ से देना चाहिए कि दोनों हाथ से दोनों कान में? कान या कान में? हाँ कान में। कान में कब वाइब्रेशन देते हैं? कान में बंधन, जैसे कि कम
सुनने के कारण बंधन लेती है हाँ, जब लेती बंधन रहती देते हैं तो हाँ, दोनों राइट हैंड से देते हैं। हूँ। दोनों कान में राइट हैंड से दोनों कान में आई मीन दोनों हाथ से वाइब्रेशंस आएंगे, आप दोनों हाथ से दे सकते हैं अलग अलग। अच्छा, अलग अलग दोनों हाथ से तो मैंने दाया से बाया ना, दोनों कान में दाया से बाया, मतलब जैसे घुमाती हूँ, बंधन भी लेती घुमाती हूँ तो दाहिने से लेना है। हाँ, बंधन राइट हैंड से ही देते हैं। अच्छा, ओके भैया, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। आज 5 के सेशन में जो आपने लगाई थी ना, इसका पहले वो विराट 5 में भेज दीजिएगा। अमृतवाणी अभी लगाई थी ना। अमृतवाणी, हाँ, अमृतवाणी अभी भेजता हूँ मैं। हाँ, विराट 5 में भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ, सब विराट में भेजते हैं, एक में नहीं, सब में भेजते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। భయ్యా ఇప్పుడు ఈ రెండు విశుద్ధి చేసినప్పుడు పామ్ మీద మాత్రమే కోల్డ్ కూల్ గా ఉంటుంది, ఫింగర్స్ మీద ఏమీ రావట్లేదు. అంటే మీకు 3 నెలలు అల్లా అక్బర్ లార్డ్స్ ప్రేయర్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే భయ్యా. మీ పేరు భయ్యా? మీరు ఏ ఊరు? తిరుపతి అండి. మీరు రోజు అల్లా అక్బర్ లార్డ్స్ ప్రేయర్ వచ్చు కదా? వచ్చు సార్, వచ్చండి. చేసుకోండి భయ్యా. ఇంకొకటి, నాకు 2 ఐస్ విపరీతంగా ట్విచ్చింగ్స్ 6 months నుంచి. అవును, ఓకే. అవి ఎంఆర్ఐ తీయించాము, అవి ఏమన్నా ఉన్నాయా అని. ఏమీ లేవు భయ్యా, అన్ని నార్మల్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి, కానీ ఇవి మాత్రం విపరీతంగా ఉంటున్నాయి. ఏం చేయాలంటారు? మీరు వైబ్రేటెడ్ నీల్ తయారు చేసుకోండి. ఓకే, వైబ్రేటెడ్ నీల్ తయారు చేసుకుని కొంచెం షుగర్ కూడా వైబ్రేట్ చేసుకోండి. పంచదార కొంచెం ఆ నీళ్ళలో మీరు వైబ్రేటెడ్ నీళ్ళలో ఒక రెండు ఏమంటాం మనం, షుగర్ది 2 గ్రాన్యూల్స్ అండి వేసుకుని, అది ఆ డ్రాప్స్ 1 డ్రాప్ 2 డ్రాప్స్ కళ్ళలో రాత్రి వేసుకుని పడుకోవాలి. వైబ్రేటెడ్ మాతాజీ దగ్గర వాటర్ పెట్టినవే కదా భయ్యా? అవును, ఒకసారి వైబ్రేట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు వాడుకోవచ్చు, వాడుకోవచ్చు అలాగా. ఓకే భయ్యా. ఇంకా అది సఫిషియంట్ భయ్యా? చాలా అండి, ఇంకేమన్నా చేయాలంటారా? అల్లా అక్బర్ లార్డ్స్ ప్రేయర్ చెప్పండి, అది మాత్రం చెప్పండి, దాంతోనే చాలా. యాక్చువల్ గా నిజంగా నేను 2 years నుంచి సహజ యోగా చేస్తున్నాను, కానీ మీ దానిలో నేను జాయిన్ అయ్యి 40 days అయింది చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాతే నాకు వైబ్రేషన్స్ బాగా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి ఒక రకంగా. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఫస్ట్ నాకు ఈ రైట్ ఐ అలర్జీ చాలా ఎక్కువగా ఉండేది భయ్యా, 4 years నుంచి ఉండేది. ఈవెన్ స్టెరాయిడ్ ఐ డ్రాప్స్ కూడా వాడినా కూడా నాకు ఫలితం లేదు. యాక్చువల్ గా నేను దీనిలోకి వచ్చాను సహజ యోగా చేసిన తర్వాత. యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ 1 year అంతా కూడా చాలా ఇరెగ్యులర్ గా చేశాను, కానీ మాతాజీ దయమూలన నాకు కంప్లీట్ గా క్యూర్ అయిపోయింది వితౌట్ మెడికేషన్. యాక్చువల్ గా అయితే ఈవినింగ్స్ మాత్రం వస్తూ ఉండేది కొంచెం, నేను ఉన్నాను అంటూ రైట్ అయ్యి. అసలు ఎంత పెయిన్ అంటే కన్ను పొడి చేసుకుందాం, నాకు కన్ను లేకపోయినా పోతుంది అనేది అంత పెయిన్ నేను చాలా భరించాను. అలాంటిది మీ విరాట్ లో నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక్కసారి అనుకున్నా కూడా రావట్లేదు భయ్యా. చాలా గొప్ప కృప, చాలా అండి. అసలు ఇంకెప్పటికి తగ్గదేమో, నాకు ఇలానే వస్తూ ఉంటుందేమో అనుకున్నాను. కానీ నేను ఈ 40 days నేను విరాట్ లో ఎప్పుడైతే నేను జాయిన్ అయ్యానో, యాక్చువల్ గా అసలు ఎంత అద్భుతంగా ఉందో. ఒకసారి కపిల్ భయ్య మెడిటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఆ పైన తల మీద ఏదో పొడుచుకొచ్చినట్లు అనిపించేసి తడుముకున్నాను భయ్యా నేనైతే. అసలు ఏంటి ఏదో పొడుచుకొచ్చినట్లు ఉంది అని చెప్పేసి. అద్భుతం. జయ శ్రీ మాతాజీ, అమ్మ కృప.
ప్రతి ఒక్కళ్ళు కపిల్ భయ్య, మీరు, పద్మజీ, సావిత్రి దీది వీళ్ళందరూ చేసేవి చూస్తుంటే యాక్చువల్ గా నాకు ఎప్పుడు నాకు రానిది, ఎక్కడికో ఒక అరగంట వరకు నేను మెడిటేషన్ లో ఉండి తర్వాత నిర్విచార అంటారు చూసారా, మా వారు మా పిల్లలు మాట్లాడిస్తున్నా నేను ఏదో స్టేజ్ లోనే ఉంటున్నాను భయ్య, అసలు మాట్లాడలేకపోతున్నాను. నమ్మండి భయ్య, నిజంగా నవ్వద్దు. నవ్వడం కాదు, నిజంగా అంతే, అంత ఆనందం. అసలు ఎంత ఆనందం అంటే నాకు 4 hours నిద్ర ఉంటుంది భయ్య, ఆనందం అంత పొంగిపోస్తుంది. నాకు 4 hours నిద్ర ఉంటుంది భయ్య. కానీ అయినా సరే నేను 4:30కి అలారం పెట్టేసుకొని నాకు నిద్ర లేకపోయినా పర్లేదు, నేను ఈ ఎంజాయ్మెంట్ మాత్రం నేను మిస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి నేను లెగుస్తున్నాను భయ్య. మా వాళ్ళు తిడుతున్నా, ఏదన్నా వస్తే నీకే వస్తుంది నిద్ర లేకపోతే అంటే, నాకు నిద్ర లేకపోయినా పర్లేదు, మీరు ఇచ్చే ఈ మెడిటేషన్ ద్వారా ఎంత ఎంజాయ్మెంట్ అంటే అసలు నాకైతే నేను అది వదులుకోలేకపోతున్నాను భయ్య నిజంగా. ఇంతవరకు నేను ఇంత ఫీల్ అవ్వలేదు భయ్య ఎప్పుడు కూడా. నేను చేసినా కూడా అందరూ ఇండివిజువల్ గా చెయ్యాలి అంటున్నారు కానీ కాదు, నాకు తెలియందంతా మీ విరాట్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాతే ఎంతో కొంత నాకు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాను. ఇంకా గ్రోత్ రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను భయ్య. మాతాజీ మీరు లోకల్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి, లోకల్ సెంటర్ లో మీకు తెలవాలి ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో, అప్పుడు సెంటర్ లో ఎంజాయ్ చేస్తారు బాగా. ఇప్పుడు ఈ విరాట్ చేసి సెంటర్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సెంటర్ బాగా ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి, ఇలా మీరు ఈ ట్రీట్మెంట్లు అన్ని నేర్పండి. ఖచ్చితంగా భయ్యా, ఖచ్చితంగా. అంటే నేను చెప్తున్నాను కూడా, వాళ్ళు కొంచెం అయినా సరే ముందు నేను మొత్తం తెలుసుకోవాలి బాగా, ఇంకా రావాలి. థ్యాంక్ యూ భయ్యా, నిజంగా విరాట్ టీం అంతా కూడా థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే మీకు డాక్టర్ హసీనా కూడా మీకు మెసేజ్ పెట్టుంటారు, తనే నాకు యాక్చువల్ గా దీని గురించి చెప్పారు ఆవిడ. అయితే ఆవిడ నేను అంటూనే ఉన్నాను, లేదు ఇంకా ఏదో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాము, ఇంకా ఎసెన్స్ ఏదో ఉంది, ఏదో పైన చేసుకుంటున్నాం అనిపిస్తుంది హసీనా అని ఇద్దరం అనుకుంటూ ఉన్నాము. అప్పుడు మీ విరాట్ మాకు అనిపించింది భయ్యా, నిజంగా మాతాజీ కృప మూలాన. థ్యాంక్ యూ భయ్యా, థ్యాంక్ యూ విరాట్ టీం మొత్తానికి ధన్యవాదాలు భయ్యా. థ్యాంక్ यू श्री माता जी। भैया एक चीज बताइए भैया, एक चीज बताइए, जैसे मुझे हाथ की वो करना है, जल क्रिया हाथ वाला, क्योंकि हाथों में वाइब्रेशन नहीं आते हैं, तो जो पैर में पानी मैं नीचे रख सकती हूँ तो हाथ में भी ले सकती हूँ, दोनों हाथ डाल सकती हूँ उसमें? दोनों हाथ नहीं, जैसे डॉक्टर मेहरा जी ने बताया कि हैंड सोप में के लिए एक हाथ पानी में, एक हाथ माता जी को। अच्छा, फिर बदली कर लीजिए ऐसा। अच्छा, तो मतलब पैर नहीं डाल सकते पानी में? पैर अलग ना, अभी हाथ का कर रहे तो हाथ का करिए, पैर का कर रहे तो पैर का करिए। अच्छा, ठीक है, जय श्री माता जी, बस यही पूछना था। और लेफ्ट हाथ के लिए उन्होंने तो बताया है कि गर्म थोड़ा कुनकुना पानी, मतलब नॉर्मल पानी, और राइट हैंड के लिए ठंडा पानी। करेक्ट, ऐसे ही करना। जय श्री माता जी भैया। अभी आ गई है, अभी हम लोग भैया महागणेश का मंत्र भेज देंगे क्या? नहीं, अभी क्वेश्चन सेशन के बाद अभी स्टार्ट हो रहा है शूबीट का सेशन। हाँ, ठीक है, सबको म्यूट कर रहा हूँ। मैं मैसेज डाली हूँ, महागणेश का मंत्र भेज देंगे मेरे पास। महागणेश का मंत्र वो भेजना क्या निर्मल विद्या में है ना? सबको म्यूट कर दिया मैंने। पद्मा दीदी आप आगे। यस भैया, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ठीक है, सबको म्यूट कर दिया मैंने। दीदी ओवर टू यू। जय श्री माता जी। जय श्री माता। महागणेश का मंत्र निर्मलांजलि में भी है। जय श्री माता जी टू ऑल, सबको जय श्री माता जी। चित्त सहस्रार में रखेंगे, दोनों हाथ आकाश की तरफ। आकाश देवता को देखेंगे। लेट अस कीप आवर अटेंशन ऑन सहस्रार एंड बोथ द हैंड्स टुवर्ड्स स्काई। लेट अस ऑब्जर्व द वाइब्रेशंस। आकाश देवता की महानता को महसूस करेंगे आधुनिक युग में और हमारे आत्मोन्नति में।
Let us recognize the importance of Akash Tattva in modern era and in our spiritual ascent also. So, Shri Mataji, you are Saksha Shri Akash Devta. श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आकाश देवता हो, कृपा कर हमें आकाश तत्व प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, प्लीज ब्लेस अस विद आकाश तत्व, ईथर एलिमेंट। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आकाश देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे और अल्लाह अकबर बोलेंगे। लेट अस डू प्रणाम तो आकाश देवता and let us chant Allah Akbar as usual. After chanting one time, we remove the fingers from ears and after that continuously 16 times. एक बार बोलने के बाद विशुद्धि फिंगर जो हम उंगलियां जो हम कान में रखते हैं उसको निकालेंगे, उसके बाद 16 बार फिर से बोलेंगे, कुल मिला के 17 बार बोलेंगे। पूरा गर्दन को ऊपर उठाना है और आंख खुले रखने का है, आकाश की तरफ देखते हुए हमको बोलना है। बहुत आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, मगर अल्लाह बोलते समय पूरा मुंह को ओपन करना पड़ता है ताकि आकाश से तो अंदर जा सके। वी हैव टू लिफ्ट अवर थ्रोट फुल्ली, फेस टुवर्ड्स स्काई, वी हैव टू कीप अवर ओपन आईज ओपन एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू चैंट विद बिग नॉइज वॉइस। Let us open our mouth fully when we chant Allah. Let us start. Allah Akbar. 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 साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ आकाश की तरफ लेंगे। Let us take both hands towards sky and let us observe all the fingers and physical विशुद्धि। सभी उंगलियों को और गले की विशुद्धि को हम महसूस करेंगे। आकाश देवता को प्रणाम करेंगे। थैंक यू आकाश देवता, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद।
अब हम सूर्य देवता की तरफ देखेंगे. लेट अस लुक एट सन. इफ देयर इज नो सन, लेट अस फेस टुवर्ड्स ईस्ट. अगर सूर्य देवता नहीं है तो पूरब की दिशा में हम चेहरा करके बैठ जाएंगे या खड़े होंगे. ओम त्वमेव साक्षात श्री सूर्य देवता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. प्रणाम करेंगे. प्रणाम. श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सूर्य देवता हो. कृपा कर हमें श्री सूर्य देवता की समस्त गुणों को, शक्तियों को और ज्ञान को प्रदान कीजिए. श्री माता जी, यू आर साक्षात श्री सूर्य देवता. प्लीज ब्लेस अस विद द क्वालिटीज, पावर्स एंड नॉलेज ऑफ श्री सूर्य देवता. Let us observe the changes in the vibrations after each and every prayer. हर प्रार्थना के बाद चैतन्य में जो बदलाव आता है हमको उसको महसूस करना है. अगर बदलाव नहीं आया तो फिर से हमको रिपीटली प्रेयर करना पड़ता है, फिर से प्रार्थना करना पड़ता है भक्ति से. श्री माता जी, कृपा कर हमारे पिंगला नाड़ी में श्री हिरण्य गर्भिणी शक्ति स्थापित करने की कृपा कीजिए. ये सूर्य देवता की ठंडा वाला शक्ति है, तो हम पिंगला नाड़ी में एक ठंडक को मांगेंगे. दिस इज द कूल पावर ऑफ सूर्य देवता, दैट इज हिरण्य गर्भिणी शक्ति. लेट अस आस्क फॉर it to establish in our Pingala Nadi. Shri Mataji, please establish Shri Hiranya Garbhini Shakti in our Pingala Nadi. श्री माताजी, कृपा कर हमारे इड़ा नाड़ी को और बैक आज्ञा को शुद्धता प्रदान करने की कृपा कीजिए. श्री माताजी, प्लीज क्लेंस अवर इड़ा नाड़ी एंड बैक आज्ञा. एंड गिव बैलेंस टू अवर इड़ा नाड़ी. श्री माताजी, और हमारे इड़ा नाड़ी को संतुलन प्रदान करने की कृपा कीजिए. अब हम गायत्री मंत्र बोलेंगे, एक एक बीजाक्षर के साथ एक एक चक्र में हम सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर जाएंगे. लेट अस चैंट गायत्री मंत्र, taking our attention in each chakra while chanting each bij mantra in Sushumna Nadi. Om Bhu Muladhara, Om Bhuvaha Swadishtana, Om Swaha Nabi Manipura, Om Mahaha Anahata, Om Janaha Vishuddhi, Om Tapaha Agna, Om Satyam Sahasra. Om Bhurbhuva Swa Om Tassavitvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Na Prachodayat. सहस्रार से ऊपर जाएंगे. Let us lift our attention above सहस्रार. ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम. आकाश की तरफ हम चित्त को छोड़ देंगे. Let us leave our attention towards sky. Likewise, 2 more times we will chant गायत्री मंत्र. इसी तरह हम और 2 बार गायत्री मंत्र को बोलेंगे. ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मनः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम भूर्भुवः स्व ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम
ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मनः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम भूर्भुवस्व ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो सूर्य देवता को प्रणाम करके हम पीछे मुड़ लेंगे. लेट अस डू प्रणाम टू सूर्य देवता एंड टेक टर्न बैक आज्ञा टुवर्ड्स सन. बैक आज्ञा सूर्य देवता की तरफ. लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ. लेट अस टेक लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई, folding at elbow. Back right hand on back ajna, face towards sky, keeping attention on सहस्रार and back ajna. हम चित्त को सहस्रार में और बैक आज्ञा में रखेंगे. आकाश की तरफ चेहरा रहेगा, आंख खुला रहेगा. हम प्रार्थना करेंगे. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री महाभैरव साक्षात् श्री महाहिरण्यगर्भा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री माता जी कृपा कर हमारे बैक आज्ञा में आइए माँ. हम महसूस करेंगे श्री माता जी का बैक आज्ञा में आने का. लेट अस फील द changes in vibrations after praying. Come Shri Mataji, inviting Shri Mataji. Let us feel that Shri Mataji arrived there. Shri Mataji, कृपा कर मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे पितृओं से, मातृकुल पितृकुल के पितृओं से, ससुराल की तरफ के पितृओं से, जाने अनजाने में, सत्य के विरुद्ध में, आदिशक्ति के विरुद्ध में जो कोई भी भूल हो गई हो माँ, श्री माता जी कृपा कर हम सबको क्षमा कीजिए. श्री माता जी हम सबको आत्मोन्नति प्रदान करने की कृपा कीजिए माँ. श्री माता जी हमारे पितरों को सद्गति प्रदान करने की कृपा कीजिए और उनके प्रभाव को हमारे सूक्ष्म यंत्र से पूर्ण रूप से दूर करने की कृपा कीजिए. श्री माता जी, if any mistakes done by me, my family and my ancestors of parents side and for in-laws side, knowingly or unknowingly, please forgive all of us. Shri Mataji, please bless all of us with ascent. Shri Mataji, please bless our ancestors with ascent and remove all the effects of them from our subtle system. राइट हैंड धरती माता की तरफ लेंगे, नजर धरती माता की तरफ. Let us look at Mother Earth. Right hand towards Mother Earth. Let us observe back ajna from Sahasrara. बैक आज्ञा को सहस्रार से महसूस करेंगे.
दोनों हाथ आकाश की तरफ, नजर आकाश की तरफ। चित्त सहस्रार से हम आकाश देवता को भी जोड़ेंगे तीनों जगह में, बैक आज्ञा सहस्रार एंड आकाश देवता। Let us take both the hand towards sky. Let us connect Akash Devata with our Sahasrara, keeping attention on three places, back Agna, Sahasrara and Akash Devata. श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आकाश देवता हो माँ, हमारे माध्यम से बहने वाले परम चैतन्य को स्वीकार कीजिए और पूर्ण परिसर में और पूर्ण विश्व में फैलाने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, please receive the vibrations flowing through us and please spread it all over the area and all over the world. दसों उंगलियों को महसूस करेंगे। Let us observe all the 10 fingers, all the chakras. हम दिन में कम से कम आधा घंटा क्लाउड वाइब्रेट करने की आदत डालेंगे। अगर हमारे पास समय हो तो दसों उंगलियों में और पांव के उंगलियों में भी चैतन्य बहे, तब तक हम क्लाउड वाइब्रेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा स्थिति। हम आकाश देवता को प्रणाम करके बैक आज्ञा को टैप करेंगे। लेट अस मेक द हैबिट ऑफ vibrating the clouds minimum half an hour a day. If we vibrate the clouds, still we get the feel the vibrations even in the feet, fingers of the leg, then the state will be very nice. Let us tap back Ajna and take turn. सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे। थैंक यू सूर्य देवता, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आकाश देवता, धन्यवाद आकाश देवता आपकी सहायता के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए। हम दोनों हाथ चैतन्य महसूस करेंगे आंख बंद करते हुए। Let us take बंधन with these vibrations. ये चैतन्य से हम बंधन लेंगे। कुंडली माँ को महसूस करेंगे। कवच लेंगे, पीड़ा नाड़ी से लेफ्ट हैंड से चैतन्य लेते हुए शरीर के आजू बाजू में धीरे से हम इसको फैलाएंगे। Attention on vibrations, receiving from left hand and flowing it around our body slowly. Let us make thick kavach.
चैतन्य को महसूस करेंगे बंधन लेने के बाद. Let us observe the changes in the vibrations after taking bandhan. Now let us clean the place where we are going to do shubit with these vibrations. अब हम इस चैतन्य से जहां हम शोभित करने जा रहे हैं उस जगह को शुद्ध करेंगे. दोनों हाथ धरती माता के ऊपर. Let us keep both the hands on Mother Earth. धरती माता को महसूस करेंगे. ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री माता जी आप ही साक्षात श्री गणेश माँ कृपा कर हमें सामूहिकता में शोभित करने की अनुमति प्रदान कीजिए. समस्त विघ्नों को दूर करने की कृपा कीजिए माँ. श्री माता जी आप ही साक्षात श्री आदि भूमि माता हो. कृपा कर हमें क्षमा कीजिए. ये कार्य करने के लिए हमें क्षमा कीजिए माँ और हमें शुद्ध करने की कृपा कीजिए. आप ही साक्षात श्री सर्वकर्ता हो श्री माता जी. कृपा कर हम सबसे सामूहिकता में शोभित करा के लेने की कृपा कीजिए. श्री माता जी you are Saksha Shri Ganesha. Please permit all of us to do collective shobit and please remove all the vignas. Shri Mataji, you are Saksha Shri Adi Bhumi Mata. Please forgive us for doing this upon you. Shri Mataji, please cleanse us and permit us to do collective shobit. Shri Mataji, verily you are the doer. Please make all of us to do collective shobit and please cleanse us. Make all of us nirmal. ब्रह्मरंध्र को सुषुम्ना को महसूस करेंगे. Let us observe ब्रह्मरंध्र and सुषुम्ना and vibrations of mother earth. धरती माता का चैतन्य को भी महसूस करेंगे. पूर्ण निर्विचारिता में चले जाएंगे. पूर्ण शोभित में हम पूर्ण निर्विचारिता में रहेंगे. धरती माता को प्रणाम करेंगे. Let us do pranam to धरती माता, मदर अर्थ and give बंधन. बंधन देंगे. आज हम 2 राउंड करने जा रहे हैं. पहला राउंड विराट डेली मेडिटेशन ग्रुप के समस्त साधकों के लिए और सेकंड पर्सनल राउंड. विशुद्धि फिंगर से एक सर्कल डालेंगे. विराट डेली मेडिटेशन ग्रुप के समस्त साधकास और फैसिलिटेटर्स के आत्मोन्नति के मार्ग में आने वाले सभी प्रकार के अड़चने और बाधाएं. हम इसको बंधन देंगे. लेट अस गिव बंधन.
सरेंडर करेंगे श्री माता जी के चरण कमलों में। श्री माता जी, विराट डेली मेडिटेशन ग्रुप के समस्त साधकों के आत्मोन्नति के मार्ग में आड़ाने वाले सभी प्रकार के अड़चनों को दूर करके सबको आपके चरण कमलों की योगी बनाने की कृपा कीजिए मां। सभी प्रकार के सूक्ष्माति सूक्ष्म अड़चनों को, बाधाओं को दूर करने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, प्लीज रिमूव ऑल द ऑब्स्टिकल्स, negativities and badhas in the path of ascent of all the sadhakas of Virat daily meditation group, and please make all of them, all of us worthy of your lotus feet. Please remove all the minute problems, Shri Mataji, all the negativities and badhas. अब हम लेफ्ट चप्पल लेंगे, बंधन देंगे, चित्त सहस्रार में पूर्ण निर्विचारिता में रहेंगे। Let us give bandhan to the left chappal. थोड़ा चैतन्य देंगे। Let us give some vibrations to make that effective. अब हम हमेशा की तरफ, आकाश की तरफ देखते हुए चित्त सहस्रार में सहस्रार को और लेफ्ट हैंड को महसूस करते हुए बहुत हल्के हाथों से हम शुभिट करेंगे पूर्ण निर्विचारिता में रहते हुए। As usual, looking towards sky, observing our Sahasrara and left palm, being in thoughtlessness, very slowly respecting Mother Earth. Let us start Shubit. Let's beat this one. Let us start Shubit. शुरू करेंगे। हम हृदय में भी प्रार्थना कर सकते हैं। We can pray in our hearts. जो चैतन्य अंदर आ रहा है उसको हम लेंगे अंदर। Let us receive the nectar which is flowing in from Sahasrara to Agna to Vishuddhi. Let us hold it in Vishuddhi for a minute. विशुद्धि में थोड़ी देर के लिए रखेंगे हम और ललिता चक्र और श्री चक्र में लेके जाएंगे। दोनों कंधों में थोड़ी देर के लिए लेके जाएंगे। राइट हैंड में लेके जाएंगे और अंदर जाने देंगे। Let us allow it to flow inward and take some portion to the right hand.
महसूस कीजिए पूर्ण कलेक्टिविटी में कहाँ समस्या है। इड़ा नाड़ी के मूलाधार में समस्या है, लेफ्ट भवसागर में समस्या है। लेफ्ट भवसागर थोड़ा ज्यादा है। हम लेफ्ट मूलाधार को पहले देखेंगे सहस्रार से। लेट अस पुट अटेंशन ऑन लेफ्ट मूलाधार फ्रॉम सहस्रार। लेट अस सी व्हाई लेफ्ट मूलाधार इज गेटिंग प्रेशर। देखेंगे कहाँ से मूलाधार में प्रेशर आ रहा है। राइट स्वादिष्ठाना लेफ्ट मूलाधार देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठाना लेफ्ट मूलाधार देखेंगे। Let us observe left Swadhisthana, left Muladhara together. लेफ्ट स्वादिष्ठाना उंगली के टिप में हम अटेंशन डालेंगे, उंगली के ऊपर में। लेट अस पुट आवर अटेंशन ऑन द टिप ऑफ लेफ्ट स्वादिष्ठाना फिंगर। यस, लेफ्ट स्वादिष्ठाना लेफ्ट नाभि मूलाधार को छोड़ेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठाना लेफ्ट नाभि देखेंगे। लेफ्ट नाभि लेफ्ट भवसागरा।
लेफ्ट नाभि राइट मूलाधार देखेंगे एक बार। लेफ्ट नाभि राइट स्वादिष्टान देखेंगे। इस इधर लेफ्ट नाभि राइट स्वादिष्टान से अफेक्टेड है। 1 मिनट इसको ओपन करेंगे श्री माता जी की कृपा से। ओके, अभी राइट स्वादिष्टाना लेफ्ट विशुद्धि देखेंगे। हार्ट के ऊपर प्रेशर है, देखेंगे कहाँ से आ रहा है। There is pressure on heart. Let us see from where it is coming. Let us keep right Swadhisthana and left Vishuddhi in attention. महसूस कीजिए हार्ट खुल रहा है क्या। राइट स्वादिष्ठाना लेफ्ट विशुद्धि, हार्ट ओपन हो रहा है क्या, देखिए। सभी उंगलियों के ऊपर टिप में हम अटेंशन डालेंगे। Let us observe all the fingers from the tip of the fingers. अब हम लेफ्ट विशुद्धि लेफ्ट स्वादिष्टाना देखेंगे। यस, अभी पांचों उंगलियों को देखेंगे। आज्ञा 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 में अटेंशन डालेंगे।
Let us take attention to Agna chakra. Right, left, front, back, आगे पीछे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, सभी जगह हम देखेंगे सहस्रार से. सहस्रार से ऊपर जाएंगे. सहस्रार के ऊपर से एक बार लेफ्ट नाभि के उंगली को देखेंगे. Let us put attention on left nabi finger from above Sahasrara. Yes. Thank you, श्रीमती जी. अब हम रुकेंगे और इसको इकट्ठा करके आकाश की तरफ उड़ाएंगे. Let us collect this and throw towards sky. फिर से इस जगह को शुद्ध करेंगे. बंधन देंगे. विशुद्धि फिंगर से एक सर्कल डालेंगे, अपना अपना नाम लिखेंगे. Let us write our name. ईगो, सुपर ईगो, अहंकार, प्रत्यहंकार, अहम भाव, कर्ता भाव, डूअर मेंटेलिटी, हीनता की भावना और श्रेष्ठता की भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अगुरु की समस्याएं, कुगुरु की समस्याएं, अगुरु कुगुरु प्रॉब्लम्स, ऑल टाइप्स ऑफ impure knowledges, impure desires, अशुद्ध विद्याएं, अशुद्ध इच्छाएं, राक्षसी वृत्ति और प्रवृत्तियां, लस्ट एंड ग्रीड, अति मोह, व्यामोह, अशांति, असमाधान, असंतोष, असंतृप्ति, अशुद्ध चित्त, impure attention,
attention of others on me, repeatedly moving my attention on others. Fear, attachment, भय और attachment, संकुचित मनोभावना, अरिषड्वर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, साक्षी भाव की कमी, lacking in witness state, lacking in collectiveness, सामूहिकता में रहने की इच्छा शक्ति की कमी, आंतरिक परिवर्तन होने की इच्छा शक्ति की कमी, lacking in desire to internal transformation, lacking in forgiveness, क्षमाशीलता की कमी, समग्रता की कमी, lacking in integrity, परिवार से, समाज से, माता पिता से, इन लॉ से, कार्यक्षेत्र से आने वाले सभी प्रकार के अड़चने और बाधाएं, प्रॉब्लम्स फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, सोशल लाइफ, पेरेंट्स, इन लॉज एंड फ्रॉम वर्किंग प्लेस, ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं, प्रचार प्रसार में भाग लेने की इच्छा शक्ति की कमी, निर्विचारिता की कमी। अब आपको कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। इफ यू वांट टू राइट एनी पॉइंट्स प्लीज राइट। हो गया तो हम फिनिश करेंगे। मेरे आत्मोन्नति के मार्ग में अड़ाने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म अड़चने और बाधाएं। लेट अस फिनिश all types of minute problems in the path of my ascent. Let us give bandhan, keeping attention on सहस्रार। पूर्ण रूप से चित्त सहस्रार में रखते हुए बंधन देंगे। इसको श्री माता जी के चरण कमलों में छोड़ देंगे अपनी भाषा में, अपनी भावनाओं के साथ। लेट अस सरेंडर एट द लोटस फीट ऑफ श्री माता जी in our language and with our emotions. अब हम राइट वाला चप्पल लेंगे और बंधन देंगे। लेट अस टेक राइट चप्पल एंड गिव बंधन। चैतन्य देंगे। लेट अस गिव सम वाइब्रेशंस एज यूजुअल। हमेशा की तरह हम शुभिट करने को शुरू करेंगे। लेट अस स्टार्ट। शुरू करेंगे। ये लेफ्ट नाभि और लेफ्ट भवसागर इतना क्यों आता है पता नहीं मुझे। तो लोकसभा विधानसभा का जो सेशन अभी चालू था, मैं भी थोड़ा देख रही थी तो थोड़ा आज्ञा में आ रहा था, मगर ये लेफ्ट नाभि लेफ्ट भवसागर बहुत ज्यादा है। जो चैतन्य अंदर आ रहा है उसको लेंगे हम अंदर।
बाकी का सब लेफ्ट पहले राउंड में क्लियर हो चुका है, महसूस कीजिए। लेफ्ट नाभि भी में क्लियर हो चुका है, फिर भी हम पूर्ण रूप से, हुआ खुला नहीं है, उसको हम पूर्ण रूप से खोलेंगे, कोशिश करेंगे। लेफ्ट नाभि को देखेंगे। महसूस कीजिए, अभी लेफ्ट नाभि खुल रहा है तो लीवर भी ठंडा होने को शुरू हो गया, महसूस कीजिए। Let us observe that when left navi is opening now, liver is also getting cool. Left navi, left Swadishtana. लेफ्ट हार्ट को भी देखेंगे। यस, लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट आज्ञा देखेंगे।
श्रीमती जी कृपा कर हमारे लेफ्ट आज्ञा में आई हुई सभी प्रकार की कंडीशनिंग को, नेगेटिविटीज को, राक्षसी तत्वों को, शक्तियों को दूर करने की कृपा कीजिए। महसूस कीजिए लेफ्ट आज्ञा जैसे जैसे ओपन हो रहे हैं, लेफ्ट सहस्त्रारा, राइट हार्ट फ्लो अच्छे से बढ़ रहा है। अबोव सहस्त्रारा, पांच उंगलियों को महसूस कीजिए, लेफ्ट हैंड के सहस्त्रार को भी महसूस कीजिए। Let us observe all the fingers of left hand, even Sahasrara and Bhavasagara, from above Sahasrara. Yes. अब हम रुकेंगे. Let us stop. Let us collect this and throw towards sky. इस जगह को बहुत अच्छे से शुद्ध करेंगे. Let us clean this place nicely. Let us give bandhan till we get the vibration from this place. इस जगह से चैतन्य हाथ में लगे तब तक हम बंधन देते रहेंगे. प्रार्थना करेंगे. श्री माता जी कृपा कर इस जगह में श्री गणेश तत्व को स्थापित करने की कृपा कीजिए माँ. श्री माता जी प्लीज establish Sri Ganesha principle in this place. Let us clean the chappals and give bandhan. चप्पल को बंधन देंगे. चैतन्य देंगे चप्पल को. दोनों हाथों को शुद्ध करेंगे.
हम सब विराट के अंग प्रत्यंग है, तो जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी, हमारी शुद्ध करने की, वातावरण को, विराट को शक्ति देने की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। तो हमको हमारे सभी चक्रों को डेली डेली शुद्ध करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जो अंत की समय आ रही है, तो जो फाइटिंग है पॉजिटिव और नेगेटिविटी के बीच बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसलिए हम खुद को शुद्ध करते रहेंगे। दोनों हाथ धरती माता के ऊपर, धरती माता को महसूस करेंगे। थैंक यू श्री गणेशा, थैंक यू आदि भूमि माता, थैंक यू श्री माता जी, आपने हम सब से सामूहिकता में शुद्ध करके हमें शुद्ध करने की कृपा कीजिए। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू श्री गणेशा, थैंक यू आदि भूमि माता, कृपा कर हमारे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। प्लीज एक्सेप्ट आवर प्रणाम। धरती माता को महसूस करेंगे। लेट अस टेक बंद। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू। जय श्री माता जी टू ऑल। अब हम हाथ को सोप डाल के धोएंगे, हाथ पाँव को। और ओपन हाउस है, हम जो कुछ भी प्रश्न पूछना है तो उधर ओपन हाउस में जुड़ेंगे। जय श्री माता जी, हैव ए निर्मल डे। जय श्री माता जी टू ऑल। टुडे ओपन हाउस इज देयर, लेट अस ask our questions, whatever is there. Jai Shri Mata.